Let us check homework question of previous class. In previous class, one question was given in which u is given 50 meter per second and it is a body is thrown at an angle 37 degree with the horizontal. You were asked to find r, h and t. Very simple question. Here in this, for the part A, now r can be written as u square sine 2 theta by g, right? Now u square sine 2 theta can be written as 2 sine theta into cos theta. Here we have broken sine 2 theta into 2 sine theta into cos theta because here angle is 37 degree and we don't know the value of sine 74 degree. Okay. So here it will be u square, that is u is given 50 square 2 and sine 37 into cos 37 by 10, and from this triangle, and you can remember this triangle, this 37 degree, so it will be what, 3 by 3. So after putting these values, sine 37 will be 3 by 5 and cos 37 will be 4 by 5 divided by 10. Finally it comes out to be 2400 मीटर. ठीक है, ये 2400 मीटर आ रहा है. ओके, तो रेंज, तो ये कितना हो गया, लगभग 2.4 किलोमीटर. ओके, now to find h can be written as u square sine square theta by 2g. Okay, so u square is 50 square, sine square is 3 by 5 whole square into 1 by 20. Okay, so from here h will be 45 meter. ठीक है. And if we talk about t will be t equals to 2u sine theta by g. Okay, so 2 into 50 sine 37 by g. Okay, so it comes out to be 6 seconds. ठीक है. Next, B part of the question. Velocity after 2 seconds. To find velocity will be Vx I cap plus Vy j cap, right? So Vx I cap will be Ux I cap and Vy will be Uy plus Ayt j cap. Okay, so Ux, here initial velocity in x direction is u cos 37 degree I cap plus Uy will be u sine 37 degree minus g into t is 2 seconds, so it will be 2g to j cap. Okay, so from here u is given 50 and cos 37 degree will be 4 by 5. It will be 4 by 5 I cap
plus 50 into sin 37, that is 3/5 minus 20 j cap. I cap, and this will be plus 10 j cap. Okay, V vector will be this. Okay, if we want to find the magnitude of V vector, so magnitude of V vector will be 40 square plus 10 square. Okay, so from here it will be 10 root 5 meter per second. Sorry, not 10 root 5. It will be 10 root 17 meter per second. Okay. Let us check the third part of the question, which is velocity of the particle at the time of collision with the ground. Okay. तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट वॉज 6 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड सिंपली इसी तरीका से निकाल सकते हैं. सो सी पार्ट वी वेक्टर विल बी अगेन यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप. ठीक है, तो यहाँ से ये चीज तो ये तो 40 आई कैप ही रह जाएगा, और यू आई जो है वो हो जाएगा 40 माइनस 2, ये टाइम इज 6, तो 6 इंटू 10 जे कैप. सो इट इज 40 आई कैप माइनस 30 जे कैप. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब बॉडी वाज थ्रोन लाइक दिस, सो वेलोसिटी is like this. This is velocity in x direction and this is velocity in y direction. Okay, y direction it is 30 meter per second and x direction it is 40 meter per second. Let us check this second question. At time t equals to 0, a small ball is projected from A. Suppose this is point A. Ball is projected at an angle 60 degree and u here is 30 meter per second. Now it is said that determine the two time t1 and t2 when the velocity of the ball makes an angle 45 degree with the horizontal. Two time when the ball will make, suppose this is the instant when the ball is making angle 45 degree with the horizontal. Another instant will be during the downward journey. Okay, तो यहाँ पे हमको ये दो टाइम इंस्टेंट निकालना है. Suppose here it is time is t1 and here time is t2. T1 and T2. Okay, so you can clearly see in this case what will be the time. You know this is u cos 30, this is u equals to 30, so suppose here it is v1. Okay, so you know that v1 cos 45 will be equals to u cos
45 because the velocity in x direction will not change. Okay, sorry, u cos 60, not 45. U cos 60. Initial velocity was in this direction, and at this instant velocity in x direction is v1 cos 45. So magnitude same रहेगा. So you know u is 30, cos 60 degree is half, and cos 45 degree will be, okay, 1 by root 2. So v1 is this. So it is v1 is 50 root 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, v1 निकल आया. So t1, to find t1, if we know v1, we can say velocity in y direction. So uy was how much? Uy is u sin 30, u sin 60, sorry, u sin 60, u is 30, and sin 60 is root 3 by 2, that is 15 root 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, uy हो गया. So what will be vy? Vy will be v1 sin 45. Vy will be v1 sin 45. So v1 is 15 root 2 and sin 45 degree is 1 by root 2. So it is 15 meter per second. Now we know Vy and we know Uy. So can we find T1? T1 Vy equals to Uy plus Ayt. So Vy is plus 15 as it is in upward direction, and Uy is plus 15 root 3 minus gt. G is 10. Okay, तो t यहाँ से कितना आ गया? 15 minus 15 root 3, that is 15 minus root 3 minus 1 by 10. ठीक है, ये आएगा, that is t1. Suppose this is time is t1. So here the answer will be 1.09 second. Similarly, if I have to find t2 at time t2, I can say to find t2 this Vy will be just negative Vy, as here velocity will be same, just in opposite direction. So it is minus 15, so to 15 root 3 minus 10 t2. Okay, so t2 will be 15 root 3 plus 1 by 10. So it comes out to be 4.09 seconds. Okay, so you can find both the times t1 and t2. Now let us take one question which you should try yourself. The horizontal range of a projectile is 2 root 3 times its maximum height. Find the angle of
angle of projection. Okay, ये क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है, दिस यू शुड ट्राई yourself. Okay, now let us see some another type of projectile motion. Basically now projectile is fired from some height, है ना. Basic concept will remain same here also. Suppose in this case, suppose the projectile is fired from some height h. That is, in case when the projectile or a body is thrown from top of the tower, or it is thrown from some vertical height. Okay, suppose here the body is projected, or a projectile is projected at some angle theta with the horizontal. Suppose u is the velocity. Now, so this will be the path taken by this projectile, and it will hit somewhere here on the ground. Okay, let us take this point as O, and this is as A, and this is as B. ठीक है. So here suppose upward direction we are taken as positive, and downward direction we are taking as negative, and this direction again positive, and this direction is negative. We can write equations of motion as, and this is suppose R. Okay, so for displacement in y direction at any time t, you can write Sy equals to uyt plus half ay t square, right. ये यूज कर सकते हैं. ठीक है. टू फाइंड, सपोज टू फाइंड द टाइम ऑफ लाइट, टाइम, टोटल टाइम taken to strike the ground. Time taken to strike the ground, Sy will be how much? Minus h. Okay. Uy will be u sin theta t and minus half gt square. Solving this, you can get what? T, that is time taken to strike the ground or to reach the position B. Similarly, if I want to find this R can be written as u cos theta into T. Suppose we have to find V at any instant. ठीक है. This is Vx and this is Vy. Okay. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. ये 2 था. ठीक है. तो Vx will be Ux, as there is no acceleration in x direction, so velocity in x direction will not change. What will be Vy? Vy will be Uy plus Ayt. Uy is u sin theta minus Ay is minus gt. So this will be Vy. ठीक है. Ux मिल गया, Vx मिल गया,
ये तो u cos थीटा होगा। हमको Vx भी मिल गया, Vy मिल गया, तो V वेक्टर कैन बी रिटन एज Vx I कैप प्लस Vy j कैप। ठीक है, इन जनरल। ओके, नाउ वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट to solve problem related to this. That means when projectile is fired from some height. Okay, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। Suppose there is a tower of height 20 meter. ठीक है, now a ball or a body is thrown horizontally from the top of the tower with 15 meter per second. ठीक है, question asked here is first time taken by the ball to hit the ground. ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड पार्ट, हाउ फार फ्रॉम द बेस, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ building the stone strikes the ground. Third part, the speed with which stone strikes the ground. Okay, fourth part of the question is change in velocity between initial and final position. Fifth part, magnitude of average velocity in a time interval t equals to 0 to t equals to 1 second. ठीक है, ये 5 चीज पता करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। You can pause this video and try solving this by yourself. Okay, now let us check the solution. For the first part of the question, time taken by the ball to hit the ground, first part. Okay, time taken by the ball to hit the ground. We know to find the time taken, we can utilize this equation, Sy equals to uyt plus half ayt square. Okay, so here Sy will be minus 20. My sign convention remains same. Remember here ball was thrown horizontally, so uy is 0 and will be minus half into 10 into t square. Okay, तो यहां से t आ गया 2 seconds. ठीक है, similarly for the second part,
हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि रेंज निकालने बोला है, ठीक है, ये कहीं इधर स्ट्राइक करेगा, ये आर निकालने बोला है। तो यू कैन डायरेक्टली से दिस आर विल बी यू कॉस थीटा इनटू टी, टी इज टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड। Okay, here u cos theta into t. Here you can see ball was already thrown horizontally. So this here cos theta will be 0 degree, right? Cos 0 degree is 1. So I can directly say it will be u, right? Here ball is thrown in horizontal direction. Velocity in horizontal direction is already 15, and this it will be 15 into 2, that is 30 meter. Okay, now let us check the third part of this question. The speed with which stone or the ball, here it was ball, strikes the ground. Okay, so to find the third part of the question, the speed with which ball strikes the ground. To find the speed with which ball strikes the ground, we will be Vx square plus Vy square root. You know that Vx will be equals to Ux. Ux is 15 meter per second. To find Vy, it will be Uy plus Ay into T. So here Uy is 0, Ay is minus 10, and T is 2 seconds. Okay, so Vy will be minus 20 meter per second. Minus sign just shows the direction. Okay, so from here you can clearly see speed will be 15 square plus 20 square. Okay, so it comes out to be 225 plus 400, that is under root 625, and it is 25 meter per second. Clear? Now if we see the fourth part of the question. Fourth part of the question was change in velocity between initial and final position. Change in velocity, delta V. Delta V vector, here it was asked change in velocity. It can be written as Vf minus Vi, Vf vector minus Vi vector. Vf can be written as Vx I cap plus Vy j cap, and Vi can be written as Ux I cap plus Uy j cap. Okay, here Vx and Ux will be same, so this will get cancelled out. So Vy, here Vy will be minus 20 j cap, and Vi is 0. Okay, Ui is 0, so it will be minus 20 j cap. Clear? Now for the fifth part of the question. Fifth part of the question is magnitude of average velocity in time interval t equals to 0 to t equals to 1 second. t equals to 0 से 1 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है. मान लेते हैं t equals to 1 सेकेंड में पार्टिकल यहां कहीं है, यहां कहीं है, ठीक है. तो अब यहां पे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें? रिमेंबर एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या, ये निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा. अगर ये एस वाई
और एस एक्स निकाल ले तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, और टाइम तो इंटरवल हमको पता है 1. बट देयर इज अ सिंपलर वे. वी नो दैट दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन I can directly say average velocity can be written as Vf plus Vi by 2, or final velocity plus initial velocity by 2. So Vf is, in this case Vf can write up like this. Vf is how much? 20. Vf is how much? 15 I cap minus 20 J cap. Sorry, this was for t equals to 2 सेकेंड. तो t equals to 1 सेकेंड पे निकाल लेते हैं. Vf क्या होगा? Vf होगा 15 I कैप, और y डायरेक्शन वाला क्या होगा? y डायरेक्शन के लिए हम इस वाले एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, तो इट विल बी -2 के जगह पे 1 पुट कर दिया, -10 J कैप. ये होगा Vf. और Vi क्या होगा? Vi होगा 15 I कैप. ठीक है, और कुछ नहीं है. सो एवरेज वेलोसिटी विल बी this. Vf 15 I cap plus 15 I cap, that is 30 I cap minus 10 J cap by 2. ओके, यहाँ से 15 I cap minus 5 J cap बोल सकते हैं. ओके, तो ये हो गया आंसर. अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर √15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. क्लियर? लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. Here a bomb, this is a different type of question. A bomb is dropped from a plane flying horizontally with uniform speed so that the bomb will explode vertically below the plane. Okay, is the statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? Okay, so here there is a plane which is flying horizontally. ठीक है, ये प्लेन है, plane is flying horizontally. Okay, तो यहाँ पे
अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, ठीक है, सपोज ये कुछ v से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पे पूछा गया है कि अगर एक बॉम्ब को ड्रॉप किया जाए, ठीक है, विल इट एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। सपोज ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया प्लेन में से, ठीक है, ड्रॉप किया गया है, तो यू वी नो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बॉम्ब विल गेट वेलोसिटी v in this direction, राइट। जब बॉम्ब को u से अगर ड्रॉप किया गया u इक्वल टू सपोज कुछ भी u दिया गया है या u0 भी हो वर्टिकल डायरेक्शन में, बॉम्ब विल ऑटोमेटिकली गेट दिस v in this direction. Suppose in t seconds flight will move a distance vt in this direction, ये डिस्टेंस vt होगा। What about the bomb? Bomb will also move vt distance in this direction, बॉम्ब भी vt मूव करेगा, तो यू कैन सी दिस बॉम्ब विल डेफिनेटली एक्सप्लोड बिलो दिस फ्लाइट, ठीक है। बॉम्ब विल ऑल्सो ट्रेवल vt डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन, इन t seconds it will also travel vt distance in horizontal direction. अच्छा, how the direction of motion appear to a person standing on the ground? अगर इसको हम थोड़ा सा ये करें तो what will be the path of this bomb seen by the person standing on the ground? इसको कैसा दिखेगा? बेसिकली इसको बॉम्ब इस तरह का पाथ पे, एक पैराबोलिक पाथ पे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर बॉम्ब यहाँ एक्सप्लोड कर रहा है तो बॉम्ब इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ पे आता हुआ इसको नजर आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये था, ठीक है। तो यहां से ऐसा होगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, is the statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? ये horizontally नहीं फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन सपोज एट दिस एंगल, तो क्या ये फिर भी सही होगा? इसका आंसर आप लोगों को देना है, वी विल डिस्कस इन अ लाइव क्लास, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। A ball is thrown from the ground to clear a wall 3 meters high at a distance of 6 meters and falls 18 meters away from wall, ठीक है। Find the angle of projection of बॉल, ठीक है। यहां पे फ्रॉम ग्राउंड टू जस्ट क्लियर, क्लियर की जगह पे इसको जस्ट क्लियर बोल सकते हैं। जस्ट क्लियर मतलब जस्ट टॉप को टच करता हुआ। तो हियर वी कैन सी, हियर in this case there is a ball which is thrown with u, and suppose here it is a wall, यहाँ पे एक वॉल है, उसको जस्ट क्लियर कर रहा है
and this wall is at a distance 3 meter. A wall 3 meter high, sorry, height is 3 meter and it is at a distance 6 meter from the initial position. ओके, अब ये वॉल से कितना 18 मीटर की डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है ये बॉल. ओके, ठीक है. तो डायग्राम ये है, ये डिस्टेंस 18 मीटर हो गया. बेसिकली ऐसा देख सकते हो कि कुछ ऐसा होगा. वॉल ऐसे है, ये ऐसा, ये ज्यादा एक्यूरेट डायग्राम होगा. ठीक है, ये है 6 मीटर, ये है 3 मीटर. ओके, ये है ओ, ये है 18. ठीक है, तो यहां पे हमको फाइंड करना है थीटा. कैसे पता करेंगे यहां पे थीटा? एट दिस पॉइंट, अगर हम इसको ओरिजिन ले ले, एट दिस पॉइंट आई कैन से व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट. सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस. सो व्हाट विल बी द x and y coordinate here? Here I can say x coordinate will be 6 and y coordinate will be 3. Yes or no? So I can directly use this formula. Y equals to x tan theta 1 minus x by r. ठीक है, r भी हमको पता है 8 plus 6, 18 plus 6, 18 plus 6 हो गया ना, 24 मीटर. तो इस पे पुट कर दे अगर, इस पॉइंट पे y कितना हो गया 3, x कितना हो गया 6, 1 माइनस x कितना है 6 और r है 24. ओके, तो ये आएगा 2 tan थीटा इंटू ये 1/4, 1 माइनस 1 3/4. तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू ये कटा 2/3. थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स 2/3. ठीक है, ये होगा. तो हियर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा वाज tan इनवर्स 2/3. तो इस तरह के क्वेश्चन जहां पे वॉल को क्लियर कर रहा है, वहां पे आप सिंपली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज करके सॉल्व कर सकते हो. ये इक्वेशन, इसमें आर पता था इसलिए ये इस इक्वेशन को यूज किए. अगर आर पता नहीं होता तो वो दूसरा वाला जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस टेक वन होमवर्क क्वेश्चन. This is to try yourself. A ball is thrown from top of a building 45 meter high with a speed 20 meter per second above the horizontal at an angle 30 degree. ठीक है, find first the time taken by the ball to reach the ground. Second, the speed of the ball just before it touches the ground. Third, the distance from the wall where the ball hits the ground. And fourth, average velocity between t equals to 0 to t equals to 2 seconds. Okay? Rest we'll discuss in live class.